So practice किया सबने? अब जितना भी किया, sure. Okay. So उसका एक एक करके मुझे फिग्मा लिंक WhatsApp करो. Let's see कि किसने क्या किया. Send me the Figma link. So आज हम रिसर्च पार्ट पूरा कवर करेंगे. तो सब हम अप्लाई करेंगे फिग्मा में. Send me on WhatsApp. WhatsApp पे लिंक. That's Shruti, right? Shruti, sorry. Hi, sir. Good morning. Hi. Okay. So let's see what we has designed. Is there only me in this meeting, sir? The other students are not able to join? Sorry? Only the me in this meeting? Online, yes, you are there, but this is an offline batch going on. Yeah. Okay, okay. So there are students sitting in the lecture. Okay, okay. What? So have you also tried to design the screens that are right? Yes, sir. So send me the WhatsApp link. Click on the WhatsApp. Okay. Nice. So I couldn't hear you properly. Sorry? I couldn't hear you properly. Send me the WhatsApp link of the Figma that you designed. Okay, okay. Just send it. Ashish, Rashmi, and right? Great. So today we are going to cover the user research, general research, and competitive analysis. Right.
Hello? नहीं. Okay. Nice. Good start. Isha का भी अच्छा था. And Ashish का भी अच्छा. आपने किया प्रैक्टिस फिर क्यों? वीडियो देखा था उसका, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया. इसका वीडियो फिग्मा का. फिग्मा का आपको वीडियो समझ में नहीं आया? तो आप किसका लेक्चर का वेट कर रहे थे? क्यों? पूछ नहीं सकते थे? समझ रहा था बस यार, उसको फॉलो करना थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है. क्यों? क्या ट्रिकी हो रहा है? इतना सिंपल तो है. हाँ सर, ये बता. नहीं, अगर किया है तो बोलो हाँ किया है, नहीं किया है तो नहीं किया है. हाँ, बस उसमें फिर बहाने मत निकालो कि ये था वो था वैसा था ऐसा था. जो है मेक इट क्लियर. किया है तो किया, नहीं किया तो नहीं किया. स्ट्रेट फॉरवर्ड. Srishti, the file that you have sent, it needs access. So share me the Yes. prototype and not the file. Okay. Yeah. So click on share prototype, then send me the link. Okay. So if you see here, right, is my screen visible? Srishti, is my screen visible? Yes, it's visible. Yeah. So if you see, go here, right, on the prototype, and then if you click on share prototype, you will get this option. Here, anyone with the link, can view. This is what you have to change. So right now, what you have sent me is this. Okay. Drishti,
All right. So overall, it's a good start. Everyone has practiced Figma, which is good. अभी ठीक बनाए नहीं बनाए secondary. Okay. But at least you guys know as to how to use Figma. That is more important. So you haven't designed yet, Srishti? No, sir. Actually, I was having some confusion on all how to, so I didn't do it actually. Okay. So, but what is the confusion? The only I have doubts are the controlling this thing. Yeah. The other all very loud. So you were part of the last lecture, right? Hello. Yes, sir. You were part of the last lecture, right? Yes, I was. Yeah. So we went through the Figma, right? Yeah. The basic tools. Yeah. So you have to use those basic tools only. Because if you don't practice Figma, right, you won't Yeah. be moving ahead to the rest of the phases swiftly. Else it would be a task for you then. Yeah. ये रितेश आपके लिए भी है. Awesome. Hmm. ठीक है. Overall, fine. So everyone has did something Figma. So Srishti and Ritesh, I would request कि at least आज बैठ के उसको आपस practice करो. ठीक है. कहीं भी अटक कर तो तुरंत पिंग करो. Don't wait for the lecture के हम lecture में पूछेंगे. You have the Okay, sir. number, immediately ask. Okay. Because then you are pushed back by a week if you don't practice. Okay, sir. And everyone, please give name to the files. One has given the names. All the names are untitled. Okay. Good start. All right. So let's move ahead and begin with the research. All right. So in the last lecture we saw, correct? हमने देखा कि whatever we do, the research is at the core. Right? Research is at the core, correct? So we'll first see as to what is research. So for research, of course, we need a project. So here we are taking our first project for this batch, which is redesigning online travel booking platform. Okay. So if you see, this is a project which is an existing one. यहाँ पर already
उसका एक प्रोजेक्ट है, उसको रिवैम्प करना है, ठीक है, रीडिजाइन करना है. So what is the scope? What is the overview? Let's read it out. We are leading online travel booking platform, seeking to revamp our platform to provide superior user experience and outperform our competitors. Correct? We believe a user-centered approach is vital, and we are engaging your team to lead this transformation. Clear? So main forte क्या है कि जो competitors है उससे एक step ahead जाना है. We have to excel compared to our competitors. Okay? What is the objective of the redesign? That enhancing usability, visual appeal, overall user satisfaction, attract and retain broader user base. So it is not for niche, it is for a broader audience. Okay, इसमें सब आ गए. Then key goals for the redesign: improve overall usability, user friendliness, enhance the booking process for flights, hotels, travel services, visually appealing and consistent design language, optimize mobile responsiveness because it's a web platform. Okay, increase user engagement and retention. Clear है? So जब हमको भी प्रोजेक्ट्स आएंगे, so ऐसा ही सब कुछ होगा जरूरी नहीं है, but if you talk to them, if you understand them, so this would be their expectation that this is what I want. Yeah? Srishti, you are comfortable with Hindi, right? In between. Hello, Srishti. So, what are the expected outcomes? What the client actually wants, right? Project completion, we anticipate receiving a comprehensive design package. So they need end-to-end design, including wireframes, interactive prototypes, and design assets. Final usability test report. So this we can avoid in development department. Successful outcome is fully redesigned and user-approved online travel booking platform and sets apart in the industry. Okay. So the main motto of the revamp is it is outdated and it has to be at par to the current design trends and also to the competitors. Clear? Now let's see how do we do the user research. So the very first thing is surveys. अब ये survey जब हम conduct करेंगे, so what would be the questions? What should be the outcome of the surveys? Right? So let's form the questions. Clear? So let's go to our Figma. So everyone can start doing this with me. Okay, so I am taking an artboard of the size 1920 by 1080. Okay. ये आप आर्टबोर्ड पे जब जाओगे यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ. Then या तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, डेस्कटॉप में जाके आपने सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर एक आ गया डिफॉल्ट साइज 1440 वाला. क्लियर? उसको हम चेंज करेंगे 1920 by 1080. ठीक है? क्लियर? आप थोड़ा बेटर विजिबल होगा ना. टेक्स्ट एंड ऑल विजिबल है ना वहां से. ठीक है, ठीक है. So let's start first forming the questions. Okay, user research. So user
research. So the reason why I am doing with you guys is so आप लोग को समझ में आएगा how to do things, है ना? Rather me saying and you guys doing it. क्या हुआ दृष्टि नहीं दिख रहा है? पक्का? 1920 by 1080. ठीक है? User research. And what we need here is the survey questions. Correct. So ये size वगैरह it's fine, ये अभी important नहीं है. But the major part is the questions. So let's start forming the questions. So one by one, just tell me what questions should we ask the user that we understand about their mindset. So एक एक करके let's start with the questions. कि हम survey कर रहे हैं about this revamp, ठीक है? We want to take inputs from the user with regards to their mindset, their pain points, their expectations, okay? What more we can get from the users to understand with regards to travel booking platform here. So what would be the questions? जिसको जो question ध्यान में आता है, जो relevant होगा, we'll add it here. एक एक करके think. मतलब आप मान लो आपके दोस्तों के साथ बैठे हो, आपको ये revamp करना है. What would be the question? हाँ, related to travel booking platform. आपको उससे ऐसे questions पूछने हैं that you should understand their pain points, ठीक है? You should understand their current behavior, ठीक है? So let's write that down also कि क्या क्या आना चाहिए. So one is pain points, ठीक है? Behavior, ठीक है? और हमको पता चलना चाहिए उसका mindset. तो अभी इसके बेसिस पे फॉर्म सम क्वेश्चंस, सम जो रेलेवेंट क्वेश्चन होगा विल राइट इट. इमेजिन कि आप आपके फ्रेंड से बात कर रहे हो एंड यू आस्क क्वेश्चंस, तो क्या पूछोगे? सबसे पहले तो चलो नेम, ठीक है? नेम हो गया. दूसरा हो गया उसका एज, नंबर, ठीक है, हमको इतना कुछ काम का नहीं है. एज जरूरी है जानना. जेंडर. फिर चलो इतना बेसिक पता चल गया. लोकेशन, यस, वेरी गुड. फिर डेस्टिनेशन नहीं. hotels, like how everyone has a booking. बजट. बजट से भी जाने से पहले थोड़े और जेनरिक क्वेश्चंस. नहीं, मतलब we are not asking them कि आप बुक करो. What we are asking them is their behavior with regards to ticket booking platform. जैसे एक क्वेश्चन हो सकता है, how often do you use travel booking platform to book your to make your travel plans? Correct? How often do you use travel booking platform to plan your holidays? Correct? Safety and health concerns. Safety and health concerns. Can you elaborate? Safety and health concerns. Yeah, but what exactly? I mean, form a question for this. Is
if someone has some health issues related, so we should get to know if before they are traveling. Okay, so again, this is more into the details. Right now, what we want is a generic question, so that we understand their behavior, pain points, and mindset. So we are not asking them to book right now. ठीक है, हम उनको बुक करने के लिए नहीं पूछ रहे हैं, हम उनसे ये पूछना चाह रहे हैं, what we are trying to get is क्या कैसे यूज करते हो प्लेटफॉर्म, आपको क्या इश्यूज आते हैं प्लेटफॉर्म यूज करने में, all sort of things. ठीक है, so if you see this question, how often do you use travel booking platform to plan your holidays? ठीक है, so अभी इसमें आंसर में हम क्या देंगे, ऑप्शंस देंगे कि once a month, twice a month, वीकली तो कोई ट्रैवल प्लान नहीं करते. 6 months. Once in 6 months, 3 months हो सकता है. हाँ, लास्ट में अदर दे देंगे. Once in 6 months, actually once in a month, twice in a month निकाल लेते हैं. Once in a month, once a year, once in 6 months, once in a year, and लास्ट में अदर. अगर स्पेसिफिक कुछ होगा so they can write. ठीक है, so ये एक हमारा क्वेश्चन हो गया. अभी उसके बाद और क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं? एक्सपीरियंस नहीं, सो जैसे बुकिंग्स करते ना फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, नहीं, वो अगेन डिटेल हो गया. What we can ask is which platform do you prefer? So इससे हमको क्या मिलेगा? कॉम्पिटिटर्स. ये यूजर्स कौन से डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, है ना? So एक होता है Ease My Trip, कुछ ऑप्शंस देंगे और लास्ट में वापस 1000. ठीक है, Make My Trip, गोवा की लो, और कुछ ज्यादा ना? आधार लिख दो सर. फिर नेक्स्ट, और क्या क्वेश्चंस है? सोचो सोचो सोचो, हमको ऐसे आंसर्स चाहिए आपके पास से. सो थिंक ऑफ क्वेश्चंस कि हम जब रिवैम्प करेंगे तो हमको उनसे क्या पता चलना चाहिए कि हाँ ये इशू है, तो इसको हमको सॉल्व करना है. What do you book the most? Hotels, flights, sorry, hotels, flights, train, buses, packages, other holiday packages. Srishti, you are following, right? Yeah. Okay. So what next? और क्या questions हो सकते हैं? सोचो सोचो, सोचोगे तो कुछ दिमाग में आएगा ना. सर वो क्या कंफर्ट चाहते हैं हमसे? Elaborate. Question क्या है? सर हम क्या तो elaborate मैंने नहीं समझ रहा है. Which kind of hotels, like luxury hotels, like 2-star, 3-star? कैसे डिटेल हो गया? बाद में यूज कर सकते हैं. What are your thoughts on this website? तो फीडबैक में होगा. और सोचो सोचो, सही गलत वी आर लर्निंग, राइट? सो राइट रॉन्ग हो सकता है, ऐसा कुछ वो नहीं है कि हम क्लाइंट है तो क्लाइंट जज कर लेगा. तो थिंक. आशीष, जिगीशा,
Do you plan your holidays with a fixed budget? Right? कि अगर बजट प्लान करके जा रहे हैं या विदाउट बजट जा रहे हैं, राइट? तो सब फिर बजट भी पूछ रहे हैं। पर बजट अगेन वो इंटरनेशनल ट्रिप होगी तो अलग होगा, लोकल होगी तो अलग होगा, वीकेंड होगा तो अलग होगा. अपने लिए इनपुट के लिए कोई सेंस नहीं बनता कि क्या बजट वाला यूजर आ रहा है ना? एक्सपीरियंस तो सेम ही होना है. सर कैसा मतलब ट्रैवल कैसे करना है, इंटरनेशनल या नेशनल, लाइक इंडिया के अंदर या बाहर? वो भी सब्जेक्टिव है, उससे हमको कुछ इनपुट नहीं मिलेगा. फॉर यूएक्स यूआई हमको कुछ इनपुट नहीं मिलेगा ना कि वो इंटरनेशनल कर रहे हैं या डोमेस्टिक कर रहे हैं. डजंट मेक सेंस टू अस. डू यू यूजुअली ट्रैवल अलोन और विद फैमिली? With whom do you travel the most? फिर ऑप्शन में दे सकते हैं. Whom do you travel the most? Alone, So, friends, फैमिली. family. ठीक है. एक बार आएगा बिजनेस ट्रिप. सो इससे विल कम टू नो कि मेजॉरिटी ऑफ द यूजर्स है, अगर वो फैमिली के लिए आ रहे हैं तो उसके बेसिस पे हम कुछ ऑप्शंस बता सकते हैं. बिजनेस ट्रिप के लिए आ रहे हैं तो उसके बेसिस पे कुछ ऑप्शंस बता सकते हैं, है ना? ठीक है. और सोचो सोचो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है फॉर यूएक्स because this is the first stage of design thinking. Empathize. We are trying to understand the user, है ना? So form questions. सोचो और क्या हो सकता है. तो यूजर हमें बुक क्यों कर रहा है, मतलब बार बार प्राइस के लिए पर वो facilities के लिए. हाँ, ये पॉइंट अच्छा है. What makes you, or rather, what factors do you consider while you planning? So एक हो सकता है कॉस्ट, एक हो सकता है टाइम या स्केड्यूल, करेक्ट. एक हो सकता है अकोमोडेशन. उसको जनरलाइज में क्या बोलेंगे, नॉट अकोमोडेशन, ओवरऑल एक्सपीरियंस, स्टे का एक्सपीरियंस, ट्रैवल एक्सपीरियंस, है ना? कि अगर किसी को रॉ ट्रिप करनी है तो वो शायद 5 स्टार में नहीं रुकेगा या 4 स्टार में नहीं रुकेगा. बट इफ समवन वांट्स टू जस्ट रिलैक्स, सो वो प्रोबेबली 5 स्टार 4 स्टार में रुकेगा. ठीक है. कॉस्ट, स्केड्यूल, एक्सपीरियंस और डिस्काउंट्स. क्योंकि मेरे पास इतनी सारी वेबसाइट्स है, आई सी कि मुझे कहाँ ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है. और रिवॉर्ड्स, बहुत जगह पे होता है ना, रिवॉर्ड्स मिलते हैं तो भी आप कोई वेबसाइट या कहीं से बुक करते हैं, है ना? ठीक है. लास्ट में सब इसमें हम मल्टीपल चॉइस भी दे सकते हैं. यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल कि हाँ कॉस्ट भी है, टाइम भी है, डिस्काउंट भी है, रिवॉर्ड्स, इट्स फाइन, है ना? जिगिशा समझ में आ रहा है? ब्लैंक फेस है तो समझ में आ रहा है. ठीक है. सो लेट्स थिंक ऑफ कपल ऑफ मोर. सोचो. सो फॉर गुड. और क्या इनपुट चाहिए हमको? डू यू प्रिफर
Mostly, what do you prefer booking from? Mobile website. So we'll come to know कि अगर वो मोबाइल पे ज्यादा इंटरेस्टेड है तो रिस्पॉन्सिव पे ज्यादा फोकस करें, अगर वो वेबसाइट से ज्यादा फोकस है तो उस पे ज्यादा फोकस करें ना। और फिर ऐप भी दे सकते हैं ना हम लोग। मोबाइल में ऐप भी आ गया, हाँ ठीक है। मोबाइल हाँ वेबसाइट भी तो मोबाइल में ऐप, ठीक है। ठीक है, और सोचो यार, कोई सोच नहीं रहे। क्वेश्चंस पूछना तो सबको आता है। आशीष, एक क्वेश्चन। जिज्ञासा अग्रवाल, अब तक हमने क्या क्या किया? चलो, फर्स्ट तो डेमोग्राफिक्स है, ठीक है। नेम, एज, जेंडर, लोकेशन। हाउ ऑफन डू यू यूज ट्रैवल बुकिंग, ठीक है। विच प्लेटफॉर्म, सो हमको कॉम्पिटिटर पता चल गया, टाइम पता चल गया, वो कितनी बार आएगा प्लेटफॉर्म पे, किसके लिए आएगा वो पता चल गया, बजट कंस्टेंट है कि नहीं वो पता चल गया, किसके साथ ट्रैवल करने के लिए प्लान करते हैं वो पता चल गया, फैक्टर्स पता चल गया डिसीजन मेकिंग के, प्लेटफॉर्म पता चल गया वेदर इट इज मोबाइल और वेब। और क्या होना चाहिए? व्हाट इश्यूज डू यू currently face in travel platform? एक हो सकता है, चलो, difficult to find right package, एक हो सकता है लो डिस्काउंट, ठीक है सर, नो डिस्काउंट्स। एक हो सकता है, क्या बोलो ऑप्शंस? वो स्क्रीन ओपन करो जो यहाँ से। अच्छा, इसके वजह से। ओ, और ट्रैवलिंग में ये नहीं वेबसाइट के बारे में पूछ। बोलो क्या बोल रहे थे? लाइक ट्रैवलिंग करने में लाइक कभी कभी फेस करते हैं ना इश्यूज। So like buffer or errors, payment processes. हाँ सर, पेमेंट प्रोसेस पेमेंट प्रोसेस में पेमेंट और वेरीफाइड सर्विस प्रोवाइडर। बहुत बार ऐसा होता है ना कि होटल्स वगैरह बुक तो कर देते हैं, वहां जाके पता चलता है यार प्रॉब्लम है ना, बुक नहीं हुआ। सो सर्विस प्रोवाइडर वेरीफाइड नहीं है। और गाइडेंस, किसका गाइडेंस? प्लेटफॉर्म का, तो इससे लाइक गाइडेंस में लिखी रहती है तो यूजर को पता नहीं होता है कि कैसे यूज करना है। अभी थोड़ा डिफिकल्ट है तो, क्योंकि प्लेटफॉर्म कैसे यूज करना हो तो सबको पता ही होता और कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं मतलब कि बहुत कोने में दबा हुआ होता है कुछ, है। तो वो हमारे में कोई ऐसा फॉल्ट है या नहीं। हिडन चार्जेस, हिडन नोटिफिकेशंस, है ना, ये बोल सकते हैं rather।
And so we have 12 odd questions. है ना? Yes, sir. So let's go through it again. ये क्या है? ठीक है. So एक हो गया name, age, gender, location. How often do you use travel booking platform to plan your holidays? Travel, which platform do you prefer? What do you book the most? Do you plan your holidays? ठीक है. एक इसमें ऊपर और क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं. Do you use online travel booking platforms? Yes. No. I prefer agents. तो पता चलेगा ना एटलीस्ट कोई अगर यूज नहीं कर रहा है तो फिर क्या होगा, है ना? So this is the question. How do you book the most? What do you book the most? Sorry. Fifth, do you plan your holidays with a fixed budget? Yes, no. Whom do you travel with? Factors considered while planning. Mostly, what do you prefer booking from? Okay. अभी इसमें एक और क्वेश्चन ऐड हो सकता है, which is do you book immediately or you plan and come back for booking later? इसको ही रखो. Do you book immediately? No. I plan and book later. Yes, at times. I just compare prices at first. I check availability. ठीक है. सो इससे भी पता चलेगा कि जो यूजर आ रहा है वो इमीडिएटली बुक कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो फर्स्ट टाइम यूजर, सेकंड टाइम यूजर, उसकी जर्नी हमको पता चलेगी. कि जो फर्स्ट टाइम आ रहा है वो सिर्फ प्राइस कंपैरिजन के लिए आ रहा है, जो सेकंड टाइम आ रहा है वो बुकिंग के लिए आ रहा है ना? सो एनी डाउट्स, कोई क्वेरी या समझ में नहीं आया हाउ टू डू इट, व्हाई टू डू इट, एनीथिंग है तो पूछो, बिकॉज दिस इज द कोर. यहाँ से शुरू हो रहा है. सो the moment you start asking questions, you get into the app, you get into the platform, then it is your baby. आपको उसको बड़ा करना है, ग्रूम करना है. You have to take care of it. So this is the first step. So जब understand कि कोई बेबी होता है, ठीक है, so एक पेरेंट उसको पूछता है ना, if he is not keeping well, what happened, क्या हुआ. अपने मॉम डैड भी पूछते हैं ना, क्या हुआ, what is the issue. So what do? They empathize us. So we are doing the same thing with our users. They are facing a problem. We are trying to understand them. Okay, what is the issue? क्या problem है ना? Tell us so that we can help you. That's that. So these are the questions. अब ये questions को क्या करना है आपको? We have to create a Google form. ठीक है?
वी हैव टू क्रिएट अ गूगल फॉर्म एंड हमारे जितने भी फैमिली फ्रेंड्स वाले हैं उनको भेजना है एंड टेक देयर इनपुट्स इन द गूगल फॉर्म। ठीक है, जब वो इनपुट आएगा ना तो उसके कुछ आउटकम्स होंगे, हमको अंडरस्टैंड, हमको पता चलेगा व्हाट इज देयर पेन पॉइंट, व्हाट आर देयर पेन पॉइंट्स, व्हाट इज देयर करंट बिहेवियर एंड देयर माइंडसेट। सो विद दिस क्वेश्चंस विल बी इजीली एबल टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, अभी ये हो गया सर्वे क्वेश्चंस। नाउ सिमिलर क्वेश्चंस you can ask in the interviews also, similar questions. So जब आप इंटरव्यू में पूछोगे, of course you have to write it down, you have to write down their answers. ठीक है, पर आप इंटरव्यू में भी ऐसे ही क्रॉस क्वेश्चन ही पूछोगे, they ask one question then you ask another question, या अगर वो क्वेश्चन पे आपको कुछ और क्लैरिटी चाहिए so deep dive again. लेकिन ये जो यूजर रिसर्च है सर्वे वाला, वो आप किससे करोगे? बाकी के ऑडियंस से। इंटरव्यूज आप किससे करोगे? बाकी के ऑडियंस से करना है तो कर सकते हो, बट इंटरव्यूज मोस्टली उनके एग्जिस्टिंग यूजर्स के साथ करो, राइट? उनके एग्जिस्टिंग यूजर्स के साथ। तो आपको इसमें से कुछ क्वेश्चंस चेंज करने पड़ेंगे, है ना? जैसे व्हाट ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म डू यू प्रेफर? सो वो ऑलरेडी अगर मेक माई ट्रिप का यूजर है तो आपको उसको थोड़ा ट्वीक करके पूछना पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम मेक माई ट्रिप डू यू ऑल्सो यूज सम अदर प्लेटफॉर्म, है ना? व्हाट डू यू लाइक अबाउट दैट प्लेटफॉर्म, व्हाट यू डोंट लाइक अबाउट दैट प्लेटफॉर्म। सो वो आपको इंटरव्यूज में ज्यादा पड़ेगा। सो वन इज द सर्वे जो आपको जेनरिक सब ऑडियंस को आप भेज सकते हो, और दूसरा होगा टू एग्जिस्टिंग यूजर्स। तो आप क्लाइंट से बात करके पूछ सकते हो कि गिव अस सम नंबर्स, वी विल टॉक टू देम, वी विल अंडरस्टैंड देयर इश्यूज एंड देन वी विल कम अप विद द सॉल्यूशंस। क्लियर? सो दिस वाज अबाउट द यूजर रिसर्च एंड द इंटरव्यू पार्ट। क्लियर? सर लास्ट में क्वेश्चन आ जाता ना, ओवरऑल एक्सपीरियंस और रेटर्स से सर, ओवरऑल आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है? लाइक रेटिंग देते लास्ट में क्वेश्चन होता है, वो डिटेल हो गया। पर आप कौन से प्लेटफॉर्म का लोगे ना, यू हैव टू बी स्पेसिफिक। या क्वेश्चन ऐसे कुछ फॉर्म करो दैट वी अंडरस्टैंड कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, है ना? Sir, during traveling, which facilities do you want? Like, अभी तो ट्रेन में से भी ऑर्डर करते हैं ना फूड। ये बीच में से ले जाओ, हो रहा था या पीछे से? नहीं, एक जन आगे आ जाओ या यहाँ पर आ जाओ। हाँ, सॉरी फॉर दिस। Right. Good. So, yes, we are here. Do you prefer post sales service while traveling? Yes and no. ठीक है? So, हमने देखा यूजर रिसर्च इंटरव्यू में भी सेम क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? नाउ मूविंग टू द जनरल रिसर्च। अब जनरल रिसर्च में क्या होगा? स्टैट्स एंड डेटा जो रेडीली अवेलेबल है इंटरनेट पे, ठीक है? ये आपको किसी यूजर से नहीं मिलेगा, ऑफ कोर्स,
बट ऑलरेडी जो रिसर्च की हुई है ये आप चैट जीपीटी से भी कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन चैट जीपीटी पे आपको पुराना डेटा मिलेगा. देयर इज गूगल का एआई आल्सो BARD, उस पे आपको लेटेस्ट डेटा मिलेगा. क्लियर? सो मेक श्योर कि वी डू दैट सॉर्ट ऑफ रिसर्च आल्सो. अब वो डेटा रिसर्च के लिए हमको क्या चाहिए? ठीक है, सॉरी, जनरल रिसर्च के लिए. सो उसके लिए हमको कुछ तो सर्च करना पड़ेगा, है ना? सो व्हाट दैट वुड बी? अब जनरल रिसर्च से what we have to find out. चलो, let's see. एक हो गया, how many users currently use travel booking platform, correct? अभी और क्वेश्चंस बोलो क्या हो सकता है? ये अब हम पूछेंगे गूगल से, चैट जीपीटी से, बार्ड से. अब ये रैंडम क्वेश्चंस हो जाएंगे जिसपे हमको ना डेटा चाहिए. बाय द वे, रैंडम मतलब वी नीड नंबर्स, वी नीड परसेंटेजेस, वैसा. यूजर्स प्रीपेड प्लानिंग करते हैं पोस्टपेड. प्रीपेड पोस्टपेड कैसे होती है? पहले पे कर दो या 2 मंथ. सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो हमेशा पहले ही होती है ना. सर एक दिन में कितने पैकेजेस बुक होते हैं? How many packages are booked in a day overall? और कौन से प्लेसेस पे लाइक बुक ज्यादा होती है bookings? which places are traveled by users majorly? एक दिन में मतलब कितना ट्रैफिक आता है वेबसाइट या What is an average traffic on website on travel booking website? Nice. और कौन से प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा बुक होता है? which platform has most number of users and bookings? और good going. और सोचो सोचो, इसके लिए तो बहुत क्वेश्चंस बनेंगे जनरल रिसर्च के लिए. कौन से टाइप के पैकेजेस ज्यादा सेल होते हैं पर डे या नॉर्मल बेसिस? Which packages are mostly booked? Which type of packages? Which type of packages? ठीक है. और ज्यादा कौन सा ट्रैवल कर सकते हैं? मीन्स ट्रेन से ज्यादा प्रेफर या फिर what medium of travel users usually prefer? ऑनलाइन बुकिंग या एजेंट? What is the percentage of users ratio using online platforms and offline through agents? Nice. और सर कौन से सीजन वाइज कौन से टाइम पीरियड में कौन से सीजन में ज्यादा बुकिंग्स होती है?
When do users book the most In which season? throughout the year? Or do users book domestic or international? Users plan effective. और नेक्स्ट सोचो सही जा रहे हो सोचो सोचो और थोड़े क्वेश्चंस what percentage of users use mobile or website for booking? तो हमको एक जनरल पता चलेगा ना कितने वेब यूजर्स है कितने मोबाइल यूजर्स है right? और नेक्स्ट 4 more. What percentage of users plan business trip and family trip? What are the factors users consider while booking? अब इसमें शायद नंबर नहीं मिलेगा but at least you'll get something, you know, price, account, schedule, etc. जो भी है और सोचो 2 क्वेश्चन यूजर ट्रैवल के कितने टाइम पहले बुक कर रहे हैं? गुड क्वेश्चन on an average how early do users plan their trip? Good. और last, बुकिंग करने में क्या प्रॉब्लम फेस है? what are the issues users usually face while बुकिंग booking? Nice. ठीक है cool. अभी ये सारा जो स्टैट है ना ये हमको निकालना है ठीक है सो ये जो हमने क्वेश्चंस फॉर्म किए हैं ये भी हमको गूगल फॉर्म बना के यूजर से इनपुट लेना है ठीक है और ये जो जनरल रिसर्च की है अपने अपने तरीके से
चैट जीपीटी भी यूज करो, बार्ड भी यूज करो, गूगल भी यूज करो, तीनों यूज करो एंड सी कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, उसको हमको फिग्मा में ही ऐड करना है, उसको हमको फिग्मा में ही ऐड करना है। तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, ये गूगल फॉर्म का तो कुछ नहीं होगा, ये तो ऑफकोर्स गूगल पे होगा, लेकिन जो जनरल रिसर्च है तो उसको हाउ डू वी पुट इनटू स्लाइड्स। सो आप ऐसा कर सकते हो, जनरल रिसर्च, ठीक है, स्टैट्स एंड डेटा। अभी हाउ मेनी यूजर्स करंटली यूज ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म, ये आया क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, चलो इसको लेट्स सी कि इसका क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो ये अगेन 2021 का है। तो ये रिसर्च में आपका थोड़ा टाइम तो जाएगा। पर ये बुकिंग बिलियंस है, ओके नाइस। 22 798 बिलियन bookings, इमेजिन। अच्छा, बुकिंग वैल्यू है ये, अच्छा कॉस्ट है, नॉट द अमाउंट। 798 बिलियन डॉलर की बुकिंग होती है हर साल। ऑनलाइन बुकिंग ऐप रेवेन्यूज, ये रहा, ये भी अच्छा स्टार्ट है। हाँ ये रहा, ऐप यूजर्स, बिलियन यूजर्स, तो कितना है, 1.13 बिलियन यूजर्स एक साल में, इमेजिन। हमारा क्या क्वेश्चन था, currently use, okay, so the answer is 1.13 billion, so हम यहाँ पर मेंशन करेंगे 1.13 बिलियन, ठीक है। और यहाँ छोटे में हम लिखेंगे 2022 बाय बिजनेस ऑफ एप्स, इसका सोर्स भी लिखेंगे। ऐसे है ना, तो प्रॉपर हो जाता है। तो ऐसे ही हमको सारे क्वेश्चंस फॉर्म करने हैं, आई मीन सारे आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। तो आंसर वन वर्ड में होगा, सोर्स का नाम और ईयर होगा। हाँ, ये इसका आप ऐसे भी डाल सकते हो, ठीक है, यहाँ भी रखो, ठीक है। सो ये हो गया, उसके बाद आप, आपका दूसरा ये हो गया, यहाँ पर अगर किसी का सेकंड क्वेश्चन, सो अगर किसी का ये लेआउट जो है, ये आप थोड़ा आपके हिसाब से भी चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन यू नो द आंसर्स, या अगर आपको कोई और बेटर लेआउट मिलता है यू कैन डू इट। ऐसा भी कर सकते हो आपकी, आप ये एक क्वेश्चन रख सकते हो, उसके नीचे उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हो, अगर आपके पास मिलता है तो, एक दो सेंटेंस, हाँ अगर आपको मिलता है तो। और कोई एडिशनल भी, अगर अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चन भी आपको डेटा मिलता है तो वो भी आप डाल सकते हो। जैसे वो रेवेन्यू वाला था तो वो आप कर सकते हो। जैसे आपको इंडिविजुअल ऐप का भी मालूम पड़ गया, booking.com, ट्रिप एडवाइजर वगैरह का वैल्यू भी मिल गया कि 2022 में कितने वैल्यू की बुकिंग हुई, तो ये सारा स्टैट्स भी आपको जो मिलता है आप डाल सकते हो। उसमें कोई वो नहीं है कि आपने फॉर्म नहीं किया तो आप नहीं कर सकते। मोर द डेटा मोर इट इज इजियर टू सेल टू क्लाइंट, क्लियर। सो इस तरीके से यू विल हैव टू कंप्लीट द रिसर्च एंड दिस क्वेश्चन है, क्लियर। अभी कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। इसमें बहुत मजा आता है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, क्यों, क्योंकि इसमें ऑलरेडी वेबसाइट्स है, मोबाइल ऐप है, हमको उसको स्टडी करना है, ठीक है। हमको एक एक करके सारी वेबसाइट्स ओपन करनी है। सो से फॉर एग्जांपल booking.com, मेक माय ट्रिप, यात्रा, है ना। सो अभी हम
ये 3 देख रहे हैं मान लो. सो इसको हम क्या करेंगे, विल गो थ्रू इट फर्स्ट खुद से. ये कौन सी चीजें हैं, विल स्टार्ट फ्रॉम द नेविगेशन. ये इसी वापस से चलो. So what are the things in the navigation? So यहाँ पर क्या है इनका, एक तो प्राइस है, सॉरी करेंसी, लोकेशन, because this is global, booking.com. लिस्ट योर प्रॉपर्टी का ऑप्शन है, रजिस्टर, साइन इन, स्टेज which is hotels, उसमें सब कुछ आ गया एक्चुअली, होटल्स, हॉस्टल्स, 5-star प्रॉपर्टी, villas etc. सब. Flights, flight plus hotel, car rentals, attraction and airport to taxis. Sorry. So ठीक है फाइन. फिर उसके बाद जो फर्स्ट फोल्ड देखूं, so it is not that cluttered. I know कि मुझे क्या करना है, सर्च करना है. And if you see the behavior, हमेशा पहले खुद के behavior से देखो क्या करोगे आप. Forget about user, आप खुद भी एक यूजर हो. तो उसमें क्या होगा, look at the first fold always. इसको हम first fold बोलते हैं. ये जो दिख रहा है, कोई भी वेबसाइट का जो फर्स्ट लोड होता है उसका हम बोलते हैं फर्स्ट फोल्ड. ये दिस इज द फर्स्ट फोल्ड ऑफ मेक माई ट्रिप. ये जितना दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट फोल्ड. ठीक है, फर्स्ट फोल्ड. उसके बाद जो आता है स्क्रॉल करके दिखता है, दैट इज द सेकंड फोल्ड. क्लियर? इसके बाद जो दिख रहा है वो सब सेकंड थर्ड फोल्ड जो भी है, बट दिस इज ऑलवेज द फर्स्ट फोल्ड. फर्स्ट फोल्ड हमेशा इतना इंपैक्टफुल होना चाहिए कि यूजर को देखते से समझ में आ जाए मैं करूं क्या इसमें, है ना. व्हाट शुड आई डू. द फर्स्ट फोल्ड should be very impactful. So now compare this booking.com. ठीक है, मुझे बताइए यहाँ पर मैं सर्च करूंगा. ये अभी ये थोड़ा क्लटर्ड है ना, मेक माई ट्रिप बहुत भरा हुआ है, बट फिर भी लोग इस पे आते हैं. क्यों? बिकॉज दे आर अकस्टम्ड टू दिस नाउ. फर्स्ट टाइम देखोगे तो क्लटर लगता है, लेकिन आपको पता है कि कौन सी चीज क्या पर कहाँ पर है ना. तो इसलिए इन्होंने क्या किया है कि ये जो चीज है उसको थोड़ा बोल्ड करके इसको हाईलाइट किया. दिख रहा है ये, बट स्टिल इट इज क्लटर्ड. राइट. यात्रा पे आते हैं तो इन्होंने क्या किया है, देयर इज नो सच थिंग एज एन एंटायर पेज. offers and all that. हाँ, इनका पेज इतना सही है, बट जो मेरा प्रायोरिटी टास्क है क्या बुकिंग, वो यहाँ पर स्टिकी है लेफ्ट में, विच इज गुड थिंग. कि मैं भले ये सब देख भी रहा हूँ, आई कैन स्टिल हैव एक्सेस टू दिस. ये अच्छी बात है ना. बट यहाँ पर एक मिस गैप भी ये है कि यहाँ पे नजर नहीं जाती है नेविगेशन पे, है ना. सो आप ये देख रहे हो बट यू मिस आउट कि मैं फ्लाइट या होटल या हॉलीडेज कहाँ से देखूं. देन यू हैव टू फाइंड आउट दिस, हाउ टू चेंज, है ना. तो दिस इज अ लिटिल कंफ्यूजिंग. सो अब जब हम कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कर रहे हैं, सो उसमें हम कुछ फैक्टर्स देखेंगे. राइट. सो हु आर द कॉम्पिटिटर्स, ये हमने देख लिया, बहुत सारे. सो उसके पहले तो लिस्ट बनाओ कि हु आर द कॉम्पिटिटर्स. सो लेट्स डू इट. चलो कॉम्पिटिटर्स. ठीक है, make my trip. फिर उसके बाद यात्रा, booking.com, Airbnb और is my trip. Thomas Cook. हाँ, Thomas Cook.
और Trivago. Trivago. So Trivago is an aggregator, but still we'll consider it. Or Go. Or let's see that stack. इसमें क्या दिया नाम? ये रहा. Airbnb booking, Expedia. Yes. और TripAdvisor. ठीक है, we'll consider this 10. ठीक है, अभी जब हम कॉम्पिटिटिव रिसर्च कर रहे हैं तो we need some factors कि क्या फैक्टर्स हम कंसीडर करें, करेक्ट, while comparing them. क्या बेसिस पे कंपेयर करोगे, क्वेश्चन है ना, क्या बेसिस पे कंपेयर करोगे. सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो ना ये जितने भी कॉम्पिटिटर्स है सबके नाम यहाँ पर लोगो ऐड कर देंगे. ये हमने 10 डाल दिए, ठीक है, नॉट नेसेसरी हम 10 का करेंगे, बट ठीक है, जो मेजॉरिटी है जो बड़े बड़े हैं उनका हम करेंगे. ठीक है, सो यहाँ पर उसके हम लोगो ऐड करेंगे. सो आई एम नॉट एडिंग लोगोस बट आई एम जस्ट एडिंग दिस. ठीक है, अब कॉम्पिटिटिव एनालिसिस भी बहुत तरीके से करते हैं लोग. we'll keep it simple and easier. ठीक है, अब मान लो ये मेक माई ट्रिप है, ये यात्रा है. तो जितने भी आए, ठीक है, और नाम ये अभी हम अलाइनमेंट वगैरह में अभी मैं टाइम पास नहीं करता. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू राइट डाउन द फैक्टर्स. ठीक है, कि क्या बेसिस पे वी आर जजिंग दिस. तो एक हो गया नेविगेशन. ठीक है, कि नेविगेशन क्या कैसा किसका अच्छा है. तो मान लो booking.com, तो हाँ इसका सिंपल है, सोबर है, इजी टू अंडरस्टैंड. इसका थोड़ा डिफिकल्ट है और इसका सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है. तो यहाँ पर हम क्या फैक्टर्स डालेंगे, एक्सीलेंट, गुड, satisfactory, ओके. ठीक है, और एक हो जाएगा हमारा पुअर. सो इंस्टेड ऑफ 5 स्टार्स हमारे पास ये नंबर्स होंगे. सो अभी मान लो इसका अच्छा लगा तो हमने लिख दिया एक्सीलेंट. तो यहाँ पर हम उसका लेजेंड भी देंगे. व्हाट डज एक्सीलेंट मीन, है ना, व्हाट डज गुड मीन. तो वह हम यहाँ उसका लेजेंड दे देंगे और यहाँ पर एक एक करके सबका हम नेविगेशन के बारे में सिर्फ ये कमेंट्स लिखेंगे.
सो एक फैक्टर हो गया हमारा नेविगेशन, दूसरा फैक्टर हो गया हमारा फर्स्ट फोल्ड, हाउ इम्पैक्टफुल इज योर फर्स्ट फोल्ड। तीसरा फैक्टर हो जाएगा हमारा कंटेंट। सब कंटेंट में आपको पूरा पढ़ना नहीं है, लेकिन ये जो हेडलाइंस है ना, ये फिर ये ऑफर्स, ये आपको ये देख के समझ में आ रहा है कि हाँ इसमें मुझे क्या मिलेगा, करेक्ट। इसमें हम देखो, इसने ज्यादा अच्छे से हाईलाइट किया है ना। हाँ, सो कंटेंट वाइज इफ यू सी, मेक माई ट्रिप इज बेटर, करेक्ट। सो सेम ही हम ये यूज करेंगे, लेकिन कंपैरिजन इस चीज का करेंगे। सो एक हो गया नेविगेशन, एक हो गया फर्स्ट फोल्ड, थर्ड इज कंटेंट। क्लियर। एक हो जाएगा ग्राफिक्स, इसके ग्राफिक्स बेटर है। सो इफ यू सी यात्रा, नहीं पैथेटिक, मेक माई ट्रिप, यस इट्स गुड, it is good. करेक्ट। एंड booking.com भी अच्छा ही है, अच्छा, करेक्ट। सो इट इज ओके कि सबको, अगर दोनों अच्छे हैं तो आप दोनों को अच्छा दे सकते हो, नॉट नेसेसरी कि सबको अलग अलग ही देना है। ग्राफिक्स हो गया, फिर आ जाएगा हमारा बुकिंग। सो ये अब बुकिंग प्लेटफॉर्म है, इसलिए हम उसका देखेंगे कि बुकिंग प्रोसेस कैसा है। सो अगर चलो मान लो हुआ सर्च, तो अब ये थोड़ा डिफिकल्ट है, राइट, क्योंकि हम डाल रहे हैं चेक इन चेकआउट डेट, स्टिल इट इज नॉट वर्किंग। अच्छा, मुझे वापस सर्च करना था। So imagine it is not clear, right? यहाँ पर कैसा है, चलो let's see, hotel, Goa, search. This is very good, straight to the point. Booking.com it was difficult. यहाँ पर hotels, tourisms. Yes, even Yatra is good for that matter. So if you see, तीनों ने priority गोवा रखा था, क्यों? अभी दिसंबर आया है। Yes, right. So pre-fill करके यूजर को डेटा देना is also good user experience. So बुकिंग प्रोसेस अगर हम देखें तो अभी ये गोवा, so let's see इसका बेटर है। ये मैं प्रॉपर्टी पे आया रिजर्व, तो यहाँ पर मुझे वो रूम्स की इस पे लेके आया, टाइप ऑफ रूम्स, तो इसने टैबुलर व्यू दिया है। और इसने ओवरऑल प्राइसिंग बताई है मुझे। वेयर इज मेक माई ट्रिप क्या कर रहा है, बुक दिस, ये भी मुझे फाइनली बता रहा है, क्लियर। लेकिन इसका बेटर ये है कि सब कुछ यहाँ पर आ गया। और यात्रा और 2 नाइट्स, ये भी एक मुझे ओवरऑल प्राइस बता रहा है, चूज रूम। हाँ, पर इसका रूम सिलेक्शन ज्यादा बेटर है कंपेयर टू बुकिंग, है ना। इसमें रूम सिलेक्शन कैसा था, हाँ इसने भी सॉर्ट ऑफ टैबुलर ही दिया है, बट इसका थोड़ा नीट है, करेक्ट। सो हम यहाँ बुकिंग प्रोसेस में what we'll do is we'll again decide कि किसका बुकिंग प्रोसेस बेटर है, क्लियर। फिर एक आ जाएगा हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस, ओवरऑल डिजाइन।
ठीक है, ये मोटा मोटा किसका डिजाइन किसका ये बेटर है। और अगर आप मोबाइल ऐप का कर रहे हो तो मेक श्योर यू ऐड दी रिव्यूज, मतलब उसके रिव्यू रेटिंग जो है वो ऐप स्टोर पे जितना है वो आपको देना है, ठीक है, उसके कितने डाउनलोड्स है वो बताना है। सो राइट नाउ वी आर डूइंग फॉर अवर वेबसाइट, ठीक है। सो अगर आपको रिव्यूज ऐड करने भी है तो आप गूगल के रिव्यूज ऐड कर सकते हैं। So if you see booking.com के गूगल रिव्यूज क्या है, ऊपर रिव्यूज होते हैं। गूगल रिव्यू नहीं, ये गूगल पे इनका रिव्यू है, ये इसका देखना है। ठीक है, सो इस पे भी आप क्या कर सकते हो, इफ यू डोंट हैव गूगल रेटिंग्स, ठीक है, बट यू विल फाइंड सम रेटिंग फॉर श्योर। जो हम जनरल रिसर्च करते हैं ना, वैसे इसकी भी आप रेटिंग निकाल के डाल सकते हो। ये मैंडेटरी नहीं है रिव्यूज वाला पार्ट, रेस्ट वाला यू हैव टू ऐड। इसके अलावा भी अगर आपको कोई फैक्टर याद आता है ना, सो इट इज फ्री टू ऐड, इट इज नॉट कि आपको इतने ही ऐड करना है, ठीक है। इफ यू फाइंड कि नहीं ये कंपैरिजन भी मैं ऐड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, यू शुड डू इट, है ना। इफ दिस इज मेकिंग मोर relevance, so you can do it. Clear? Okay. So this was about the competitive research. So overall, if you see, we did user research, we found the questions, we asked the questions to the existing users, we found questions for general research, what data we want, what analysis we want, stats and data, and then we also move to the competitive analysis. So competitive analysis is super fun क्योंकि आप इतनी सारी वेबसाइट देख के उसका ये अच्छा है उसका ये अच्छा है, आप अलग अलग फैक्टर्स ऐड कर सकते हो, that this is what I like, this is what I don't like, right? So discount can be one of the factors, but keep it more with regards to experience and UI, not with regards to features, ठीक है, क्योंकि we are not here to develop और we are not here to, अगर क्लाइंट बोलता है ना कि आप हमको सजेस्ट भी करो और क्या नया फीचर ऐड कर सकते हैं, तो आप वो कर सकते हो रिसर्च, तो आप वो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में डाल सकते हो। राइट नाउ द स्कोप इज नॉट दैट वेयर आई हैव टू सजेस्ट न्यू फीचर्स, नो, आई एम ओनली सपोज्ड टू एनहांस द एक्सपीरियंस। सो एक्सपीरियंस में क्या क्या प्रॉब्लम है उसके बेसिस पे आई कैन सिलेक्ट दोस फैक्टर्स। सो यही सेम चीज हमको सारे प्रोजेक्ट्स में करनी है, क्लियर। सो आज का आपका टास्क क्या है, you have to take these questions, ठीक है, create a Google form, send it to your friends and family। तो कल तक जितने भी आता है 2, 5, 10 it is fine, just take that। इंटरव्यूज नहीं करोगे तो चलेगा। सेकंड, फाइंड दी स्टैट्स, और इन स्टैट्स को ऐसे ही फिग्मा में जैसे मैंने बताया लेके आना, ठीक है, रिसर्च करके, जनरल रिसर्च करके, ऐड टू दिस एंड ऑल्सो डू द कॉम्पिटिटिव रिसर्च। सो आई सेंड दिस लिंक, तो इस पे से वो डेटा सब मिल जाएगा। क्वेश्चंस मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा, सो इजी टू ऐड टू गूगल फॉर्म, ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस भी मैं व्हाट्सएप पे डाल, लिंक भी डाल दूंगा, सो यू नो द फॉर्मेट, क्लियर। सो कल 1 बजे का लेक्चर होगा, सो वी विल गो थ्रू दिस अगेन एंड देन विल मूव अहेड नेक्स्ट। कल क्या था, लेट्स सी, एज पर प्लान। हाँ, so okay, हाँ, so कल what we'll do is इसका outcome, which is the user persona
user journey map, and information architecture. Okay. So if we see outcome क्या होगा इसका, user personas, user journey maps, insights and findings जो हम slides बनाएंगे वो, prioritize user needs वो जो हमको questionnaire के answers मिलेंगे वो, usability issues competitive analysis में आ गया, and validation of assumption. अब ये क्या है, हमने assume किया है कि लोग ज्यादा वेब यूज करते हैं, पर क्वेश्चन से और स्टैट से रिसर्च से हमको पता चलेगा कि नहीं, आर assumption was wrong, तो इसलिए उसको एक पॉइंट बोलते हैं वैलिडेशन ऑफ assumptions. ठीक है, सो जो हमको इससे ही मिलेगा रिसर्च से. सो अब जो ऊपर के दो पार्ट है, यूजर पर्सोनास एंड यूजर जर्नी मैप्स, वो हम कल करेंगे बिकॉज वो इसके आउटकम पे डिपेंड करता है. we'll come to know the user personas based on the research, and based on the research we'll then move ahead to the journey maps, and उसके बाद we'll do the information architecture. तो कल 1 बजे का लेक्चर होगा. बी प्रिपेयर्ड, फिग्मा थोड़ा और प्रैक्टिस करना है कर लो, क्योंकि जो भी हम काम करेंगे वी हैव टू डू इट ऑन फिग्मा. ठीक है, सो डोंट गेट स्टक बिकॉज ऑफ फिग्मा. फिग्मा इज जस्ट अ टूल, इट इज नॉट यूआई यूएक्स. रितेश क्या बोला मैंने? सॉरी सर. फिग्मा प्रैक्टिस करो, जितना भी आज रिसर्च दिया है वो कंप्लीट करो. कल 1 बजे का लेक्चर है, विल गो थ्रू द रिसर्च एंड बेस्ड ऑन दैट विल मूव टू द पर्सोनास, जर्नी मैप्स एंड द इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर. क्लियर? सो दिस इज द बेस ऑफ यूएक्स. उसके बाद हम तुरंत वायरफ्रेम पे जंप करेंगे. ठीक है, वो एक हो जाएगा, उसके बाद हम वायरफ्रेम पे जंप करेंगे. सो दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट जो हम कंप्लीट करेंगे. ठीक है, एंड gradually I'll also give the second project जो आपको खुद से पूरा करना होगा as an assignment. Okay, cool. So any doubts, any issues? Srishti, any doubts and issues to you? No, sir. Cleared. Okay, perfect, cool. All right, so that's it for today, and we'll meet tomorrow. So Srishti, you will meet you on Wednesday again, so you have some more time for this. Understood. Yeah. Okay. All right, cool. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.